Hello everyone. So now let's complete this concept, and we were studying about thrombosis, and we were on the last part of it, and it was that we studied that the major triad in thrombosis is Virchow's triad, and these are the three major causes for the thrombosis condition. First is stasis, which was stagnant blood flow. Then it was endothelial cell injury, which we discussed in previous video in very detail. And now we are left with the last concept, which is hypercoagulability. And after this, we will study about embolism. So let's begin. Make sure you watch till the end to understand the concept. So hypercoagulability, as the name suggests, coagulability, which is clotting, and hyper means excess. When there is overactivity of clotting factors, और when there is clotting which is in excess, जितनी required है उससे ज़्यादा हो रही है. It could be inherited disorder or it could be acquired, and but in any case it can cause thrombosis. अब clotting ज़्यादा क्यों होगी? Like what could be the possible reasons behind defective clotting? Specifically to say excessive clotting, either it could be कि जो clotting proteins है, coagulant proteins हैं, वो या तो ज़्यादा है, या जो anti coagulant proteins हैं वो कम है. From the previous lectures, could you recall like what were they? Okay. So when we talk about procoagulant proteins, वो क्या होते हैं जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारा फैक्टर्स हो गए. ठीक है, फैक्टर नंबर 5 ले लो, 7 ले लो, 10 ले लो, है ना, 9 ले लो. जो भी हमारे फैक्टर्स क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, दे ऑल आर प्रोकोगुलेंट प्रोटीन्स. और एंटी कोगुलेंट कौन से होते हैं नेचुरली जो हमारी बॉडी में हमने पढ़ रखा है? व्हाट इज़ द एग्जांपल? प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस. ये नेचुरल एंटी कोगुलेंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. एंड मैंने अभी कुछ चीज़ों का नाम लिया क्योंकि आगे इसी के अराउंड सारी थ्योरी है. एक तो मैंने ये नाम लिया, एक मैंने फैक्टर कुछ लिए स्पेसिफिक, विच वर फैक्टर हमारा 10. इट वॉज जस्ट अ मिनट. It was 10, it was factor number 9, it was factor number 7, and it was factor number 2. Okay, these all were vitamin K dependent clotting factors. ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ था, जिसमें से इन दो का फंक्शन होता है एंटी कोगुलेंट का, एंड दीज ऑल आर कोगुलेटिंग प्रोटीन्स. मतलब कि ये क्लॉट्स बनाते हैं और ये क्लॉट्स को तोड़ते हैं. ठीक है, अब जब भी कोगुलेशन ज़्यादा होगी, कोगुलेशन ज़्यादा होने का मतलब समझ रहे हो, क्लॉट्स ज़्यादा बनेंगे, तो इसका सबसे ज़्यादा जो रिस्क रहता है, लिख लिख के पढ़ाना चाहती हूँ. कोगुलेशन अगर ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स कि क्लॉट्स ज़्यादा बन रहे हैं. तो इसका सबसे पहले सबसे मेजर रिस्क कहो या फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कहो, वो रहती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस की. वेरी हाई यील्ड पॉइंट कि जब भी हम कह रहे हैं कि हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट है, तो
डीवीटी का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है, चाहे यंग एज में कहो चाहे कैसे भी कहो, बार बार ये कंडीशन रहती है। और ज़्यादातर कौन से वेन्स इन्वॉल्व रहती है, मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था, पैर की, जैसे नी से नीचे हमारे पास जो बैक साइड पे होती हैं वो वाली वेन्स, वहाँ पे वेरिकोज वेन की का इशू रहता है। कई बार होता है कि उसी से ये प्रॉब्लम आगे वो डेवलप हो जाती है, प्रोग्रेस कर जाती है। तो वेन्स दे आर मोस्ट कॉमनली आइदर ऑफ लेग्स, या फिर हमारा हेपेटिक वेन्स भी कई बार इन्वॉल्व रहती हैं इन द कंडीशन ऑफ डीप वेन्स, या हमारी ब्रेन में जो सेरेब्रल वेन्स रहती हैं वो भी। हमेशा याद रखना, जब भी हम ये ब्रेन वाली चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये दो वर्ड्स कंफ्यूज कर जाते हैं। एक होता है सेरेब्रल, ठीक है, और एक हमारे पास रहता है सेरेबेलर। जब हम सर्कल ऑफ विलिस पढ़ते हैं, आई रिमेंबर, तो उसमें कई नीचे से ऐसे स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें पहले सेरेबेलर फिर ब्रल, सो you should remember this thing. Okay, this is not in our concept, just something for information. Okay, so legs, hepatic and cerebral veins ज़्यादातर इन्वॉल्व रहती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, ठीक है। अब क्या कहते हैं कॉज हो सकता है इसका, हाइपर कोगुलेबिलिटी का, कि क्यों क्लॉट्स ज़्यादा बन रहे हैं, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसमें क्लॉट्स ज़्यादा बनेंगे, क्लॉटिंग प्रोटीन्स ज़्यादा हो जाएंगे और एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन्स कम हो जाएंगे, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं। तो ऐसी कुछ हम 4-5 कंडीशंस पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से सबसे पहली कंडीशन है प्रोटीन सी या एस की डेफिशिएंसी, ठीक है। इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ रखा है जब मैंने आपको वारफेरिन इंड्यूस्ड नेक्रोसिस की कंडीशन के बारे में बताया था। तो मैंने बताया था कि जो वारफेरिन होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्लॉक, और वो कहाँ गया, सॉरी, थोड़ा सा एक बार साइड पे छोटा सा इसको मैं समझाना चाहूँ, अगर माइंड मैप के फॉर्म में एक रिवीजन हो जाएगी, कि मैंने बताया था कि जो हमारे पास ये वारफेरिन होता है, it is contraindicated in HIT usually because warfarin basically is it inhibits विटामिन के रिसाइकलिंग, और विटामिन के डिपेंडिंग फैक्टर्स जो होते हैं उसको ब्लॉक करता है। और वो फैक्टर्स कौन से होते हैं, प्रोटीन सी एंड एस, एंड फैक्टर नंबर 2, 9, 10 एंड 5 एंड 7 ऑल्सो, है ना, नहीं 5 नहीं होता है, ओके, ठीक है। और जिसमें से जो प्रोटीन सी है या प्रोटीन एस है, पहले सी गिरता है फिर एस गिरता है, जो कि एंटी कोगुलेंट प्रोटीन्स होते हैं, इनका लेवल सबसे पहले कम होता है। अगर तुम वारफेरिन दे रहे हो किसी को तो इनका लेवल सबसे पहले कम होगा, बिकॉज दे हैव वेरी शॉर्ट half life, and due to this reason their level falls very rapidly when warfarin is prescribed or started to a patient, and as they are responsible for anticoagulation, तो ये चीज़ कम होएगी, बट ये चीज़ तो नॉर्मली प्रेजेंट है, तो एक टेम्पररी हाइपर कोएगुलेबल स्टेट बन जाती है। और इससे एक बहुत ही कॉमन सा इशू हमें वारफेरिन से होता है, देखने को मिलता है, विच इज़ वारफेरिन इंड्यूस्ड स्किन नेक्रोसिस। बहुत ही ख़तरनाक सी कंडीशन होती है, पेनफुल भी, तो ये हमने पढ़ा था। तो यही प्रोटीन सी और एस में भी कुछ ऐसा सा ही
चीज़ है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि प्रोटीन और सी और एस के जब लेवल कम हो रहे थे तो उसकी वजह से क्या होगा, ये एंटी कोगुलेशन का काम करते हैं। जब एंटी कोगुलेशन नहीं होगी, एंटी कोगुलेशन मतलब क्लॉटिंग नहीं हो रही है, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो नेचुरल कोगुलेंट एंटी कोगुलेंट्स है वो कम हो जाएंगे, तो क्या होगा, जो कोगुलेंट्स वाले हैं वो तो ज़्यादा ही हैं, वो तो नॉर्मली प्रेजेंट है, बस इनको ब्लॉक करने वाला कोई नहीं है, तो एक टेम्पररी हाइपर कोगुलेबल स्टेट बन जाएगी. This is what we have to study in protein C and S deficiency. But the one thing which we need to add up is, ये भी मैंने कहीं पहले बताया था एक जगह वीडियो में, that protein C and S specifically they are responsible to inactivate protein 5 and protein 8. आई रिमेंबर मैंने एक वीडियो में पीछे बताया था जहाँ पे शायद यही वाला कंसेप्ट आई वॉज एक्सप्लेनिंग दैट प्रोटीन सी एंड एस दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू इनएक्टिवेट नॉट प्रोटीन सॉरी फैक्टर या फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8. ठीक है, तो अगर हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ये इनएक्टिवेट नहीं होंगे. व्हाट वुड बी द रिजल्ट, कि ये चीज़ बढ़ जाएगी, और ये बढ़ जाएगी तो क्या होगा, क्लॉटिंग ज़्यादा होएगी, और क्लॉट्स अगर ज़्यादा बनेंगे तो एक टेम्पररी हाइपर कोगुलेबल स्टेट बन जाती है, जिसकी वजह से ये कंडीशन आती है. एंड आई हैव एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट इन वेरी डिटेल इन प्रीवियस वीडियो, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन, बट मैंने एक ओवरव्यू दे दिया. अगर नहीं समझ आया यू शुड वॉच द प्रीवियस वीडियोस. द सेकेंड कंडीशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हाइपर कोगुलेबिलिटी, ठीक है, पहली थी कि अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी, देखो क्लॉट्स ज़्यादा कब बनेंगे, दो ही कंडीशन रहती है क्लॉट्स ज़्यादा बनने की. कहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं, कहीं पे भी हम कोई भी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्लॉट्स ज़्यादा बनेंगे. हमारा मेन गोल क्या है, हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी बीमारियाँ या ऐसी कौन सी डेफिशिएंसीज या कुछ ऐसा कुछ है जेनेटिक आइदर, कि जिसकी वजह से क्लॉट्स ज़्यादा बने, मतलब कि क्लॉटिंग फैक्टर्स या तो ज़्यादा हो रहे हैं या कोगुलेशन ज़्यादा हो रही है. तो वो दो वजह से हो सकती है, या तो क्लॉटिंग फैक्टर्स ज़्यादा हो रहे हैं या एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो रहे हैं, दोनों में से एक चीज़ हो रही है. अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स ज़्यादा होंगे तो डायरेक्टली क्लॉट्स ज़्यादा बनेंगे, अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को रोकने वाले फैक्टर्स कम होंगे तो भी ये चीज़ ज़्यादा होगी, क्लॉट्स ज़्यादा बनेंगे. सो दिस इज़ द मेजर कॉन्सेप्ट. तो पहला हमने पढ़ा प्रोटीन सी एंड एस डेफिशिएंसी इज़ अबाउट दिस थिंग, that when anti-clotting factors या anti-clotting proteins like protein C and protein S, they are deficient in the body, they will lead to a temporary hypercoagulable state which can increase in the clot formation. Now the second thing which is very important, very important, is factor 5 Leiden. Why is it important? Because it is the most common inherited cause of hypercoagulable state. Very important thing over here. Most common inherited cause of hypercoagulable state. Factor 5 Leiden. Okay. ये है क्या, ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें हमारा म्यूटेशन होगा फैक्टर 5 में. ठीक है, और वो म्यूटेशन क्या होता है वो मैं बताती हूँ. इट्स जस्ट अ मिनट. ओके, सो इट्स मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया. तो हमारे पास नॉर्मली क्या रहता है, जो प्रोटीन, I'm sorry I have sore throat today, जो प्रोटीन C एंड प्रोटीन S होता है ना, they both inhibits फैक्टर नंबर 5 एंड 8. ये मैंने अभी पीछे भी बताया था. So this is something which we are going to study over here, that they blocks this. सो क्या होता है ना कि वो कुछ स्पेसिफिक साइट पे क्लीवेज होती है. ये इसको इनहिबिट कैसे करते हैं कि इसकी कोई एक स्पेसिफिक साइट होती है, वो वहाँ पे आके बाइंड करेंगे और फिर उसको नेगेटिव इम्प्रेशन दिया जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगा.
बट इस जेनेटिक बीमारी में क्या होता है, फैक्टर 5 लेडन में क्या होता है कि जो साइट होती है ना क्लीवेज की, उसमें म्यूटेशन आ जाता है, क्लीवेज साइट पे म्यूटेशन आ जाता है, जिसकी वजह से जब भी प्रोटीन सी या एस कभी भी फैक्टर 5 के पास आएगा ना, उसको क्लीव करने के लिए, उसकी उस साइट पे बाइंड करने के लिए, वो चीज़ नहीं होएगी, ठीक है. सो बेसिकली द प्रोटीन नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज प्रोटीन सी एंड एस, इट इज़ they are responsible to inactivate factor number 5 and factor 8, and in this condition the factor 5 has a mutated site, and that site is basically the cleavage site for the protein C, and because that site is mutated, it means whenever the protein C or protein S it comes, it won't be able to inactivate factor 5, जिसकी वजह से ये इनएक्टिवेट नहीं होगा. तो ये काम क्या करता है, कोगुलेशन का, मतलब कि क्लॉटिंग ज़्यादा होएगी, क्लॉटिंग ज़्यादा होएगी तो ज़्यादा क्लॉट्स बनेंगे, तो एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट बन जाएगी, जो कि एक रिस्क है थ्रोम्बोसिस का, ठीक है. 2 कंडीशंस हमने पढ़ ली. फैक्टर 5 लेडन जेनेटिक है, इनहेरिटेड है, ठीक है, और इसमें क्लॉट ज़्यादा बनते हैं क्योंकि फैक्टर 5 में कुछ इस तरीके से उसकी क्लीवेज साइड पे म्यूटेशन होती है कि वो इनएक्टिवेट नहीं हो पाता है, तो ये एक्सेस में प्रोड्यूस होता है, ठीक है. इसका एक बहुत ही कॉमन सा क्ल्यू पेपर में जो हमें देखने को मिलता है वो ये आता है ना कि अगर कोई यंग पेशेंट है, ठीक है, जिसे बार बार डीवीटी का इशू है, ठीक है, कुछ उसे इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें प्रोटीन सी या एस they are not functioning properly. Why aren't they able to function? Because there is mutation in factor 5. Due to dt means due to mutation in factor 5, protein C and S are unable to work. So this could be a proper मतलब एग्ज़ाम्स में ऐसा क्ल्यू आ सकता है कि कोई यंग पेशेंट को बार बार डीवीटी का इशू हो रहा है, या बताओ उसको एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब कुछ ऐसे करके केस आ सकता है. Third condition to learn over here is prothrombin 2021OA म्यूटेशन. इस म्यूटेशन में क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन ज़्यादा बनेगा. ये भी एक इनहेरिटेड म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन है स्पेसिफिक टू से. और इस पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है उसमें कुछ इस तरीके से म्यूटेशन आती है कि प्रोथ्रोम्बिन बहुत ज़्यादा बनता है. तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, हमें पता है प्रोथ्रोम्बिन आगे जाके थ्रोम्बिन में एक्टिवेट होगा, तो फिर क्या होगा, अगर थ्रोम्बिन ज़्यादा होगा तो क्लॉटिंग ज़्यादा होएगी, और अगर क्लॉटिंग ज़्यादा होएगी तो एक अगर क्लॉटिंग ज़्यादा होएगी तो एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट जो है वो बन जाएगी. एंड हाइपर कोगुलेबिलिटी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस it increases the risk for thrombosis. So the third disorder is prothrombin 2021OA mutation, which is an inherited point mutation in which there is mutation in prothrombin factor, due to which it's produced in excess, and it further, if prothrombin is produced in excess, it can lead to excess thrombin formation, which can increase clotting, and hence there is a risk of thrombosis. Now the very fourth risk condition which can cause a
hypercoagulability state, and due to which uh, there is an increase in the risk of thrombosis is antithrombin antithrombin 3, जिसे हम AT3 भी कहते हैं, deficiency. As the name suggests, antithrombin. Thrombin is responsible for clotting, and anti means against thrombin. So basically, it usually antithrombin 3 decreases clotting. But in case of AT3, which is antithrombin 3 deficiency, what happens is heparin cannot work properly. Now, this is an important concept, and I have already told it, that the endothelial cells are responsible to secrete heparin like substances. For example, heparin sulfate, and this is responsible to bind antithrombin 3 and increase its function. Okay, so something really important over here, and just a minute. So just a minute, I just wrote it somewhere in very detail, maybe not here, just a minute. If we are studying the concept, we should do it in more detail. Okay, it was over here that endothelial cells are responsible to secrete. Okay, this is not the concept, this one was it, that heparin is basically stored in mast cells, and it is a GAG, glycosaminoglycan, and its major function is that it activates antithrombin 3, okay, which leads to inhibition of certain clotting factors, and it prevents the clot formation. But endothelial cells are not directly producing heparin. They produce heparin like substances like heparin sulfate, and it is somewhat similar to heparin. So it also has the function of anticoagulate. It acts as a anticoagulant, natural anticoagulant present in the endothelial cells of the blood vessels. So this heparin sulfate basically binds with antithrombin 3, and it increases its activity, which further inactivates some factors. We don't need to remember this, which further inactivates certain factors. Okay, so this means that clotting factors would decrease, which will certainly increase the lab test. Now, specifically, PTT is increased because we have studied whenever there is heparin is prescribed, or whenever we are monitoring heparin or heparin like substances, then intrinsic pathway is specifically affected. So even if we don't know the exact factors, we know that somewhere this thing is blocking or inhibiting the factors which are involved in the intrinsic pathway of coagulation cascade, and it's specifically increasing PTT. So this was the basic concept over here, that in this case, if antithrombin 3 is deficient, it means heparin is unable to work, because heparin sulfate would be produced by the endothelial cells as normally, but because there is no AT3, then it won't be able to bind to antithrombin 3, due to which there would be no effect of anticoagulation. Rather, it will increase clotting, because this thing is not present over here due to its deficiency. So clotting will increase again. It can our lab findings would be increase in PTT, and I hope by PTT is increased and not PT, you can relate it.
by reading the word heparin, because in coagulation cascade we have studied that whenever there is heparin monitoring, we see PTT and intrinsic pathway factors involved in intrinsic pathway are considered, whereas wherever there is coumarin therapy or warfarin therapy, it is a coumarin drug or whatever you pronounce it. In this case, PT would be monitored, and it specifically affects extrinsic pathway factors. For example, factor number 7, because there is only one factor over here. Okay. So basically these were the major things to be studied over here. Now, last but not the least thing which can increase the risk of thrombosis. Now, if there would be no AT3, there would be decreased clotting. There will be increased clotting because it is responsible to inhibit the clotting. But if it's not there, then there will be increased clotting, so it will ultimately increase the risk for thrombosis. And whenever we talk about the last condition which is responsible to increase which is associated with hypercoagulable state and it can increase the risk of thrombosis, is oral contraceptives. Yeah, this is very important to know over here, that oral contraceptives have estrogen in it. What are oral contraceptives? They are contraceptive medicines, specifically hormone mediated. More usually it's hormone mediated, and estrogen progesterone combinations are there, and estrogen is scientifically proven to increase clotting. Okay, so estrogen basically increase clotting. And how can it increase the clotting? It can increase clotting by increasing the clotting factors. It increases the clotting factors, and clotting factors बढ़ेंगे तो फिर clotting बढ़ेगी. Clotting बढ़ेगी तो मतलब क्या होगा? There would be risk of hypercoagulable state, and which increases the risk for thrombosis. Okay, so this was the whole concept of hypercoagulable state. And okay, so if we want to revise it, we can revise it as well, that hypercoagulable state में we studied around 4 disorders and one condition, one type of medicine. The first one, protein C and S deficiency. अगर ये deficiency रहेगी तो basically factor 5 में प्रोटीन सी और एस नॉर्मली क्या करते हैं? दे inactivates factor 5 and factor 8. So this is a disorder column, and these are the mechanism which is altered. So if there will be deficiency of this thing, तो ये नॉर्मली प्रोटीन सी और एस क्या करते हैं? इनको इनएक्टिवेट करते हैं, बट ड्यू टू डेफिशिएंसी दे वोंट बी एबल टू इनएक्टिवेट. Second thing we studied was prothrombin. No, it was factor 5 again. Oh, no issues. Prothrombin 2021-OA mutation, which was a point mutation in which prothrombin was produced in excess. Prothrombin इसमें excess में produce हो रहा था, जिसकी वजह से thrombin ज़्यादा produce होगा. Okay. Third thing is factor 5 Leiden, which is very important because it's one of the most common cause for hypercoagulable state. So इसमें factor 5 की जो normally cleaving site होती है, जिसमें factor प्रोटीन सी एंड एस आके बाइंड करके क्लीव करते हैं, वो उसमें म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से फैक्टर 5
जो होता है it becomes resistant to protein C, and protein C is unable to inhibit factor 5, due to which ये जो inhibition होती थी ये रुक जाएगी. किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से, which can lead to excess factor 5 production, and it can cause increase in clotting. Then just studied 83 deficiency, and it is basically in this condition heparin or heparin like substances like heparin sulfate, they won't be able to work properly because of the fact that the major protein or substance to which this heparin like substance like heparin sulfate was binding, it's deficient. And the last is oral contraceptives, in which the major mechanism was that estrogen is responsible to increase the clotting factors, which ultimately increases the clotting. So this was the whole concept of thrombosis, and by this we are completed with the concept of thrombosis. And the last of this chapter is about the embolism. As I already told, what is embolism? This is a blood vessel and this is a thrombus formed. Till the time this thing is attached to the vessel wall, till that time it is called thrombus. But when it dislodge means displaces from its place and it floats in the blood vessel, then it's called emboli. So this is the major concept of embolism. Basically it's we can say intravascular mass, and which travels in the blood vessel, and the symptoms depends upon the blood vessel involved. And there are many types of embolism. So let's talk about the types of embolism. Okay, so first is thromboembolus formation. Okay, thromboembolus is the most common type of embolism. And ये होता क्या है जो मैंने ऊपर समझाया, that when a thrombus displaces from its place from the vessel and forms obstructive thing in the blood vessel and forms the emboli. So thromboembolus is due to a thrombus which displaces from its place in the blood vessel and forms emboli. Okay, and it is the most common form of embolus. More than 95% of embolism cases are from this study. ठीक है, and इसमें भी सबसे बहुत ही the most common and prominent example is DVT, deep vein thrombosis, which can further cause pulmonary embolism, in which the thrombus dislodges from its place, specifically from the veins involved, deep veins involved in the legs or in the hepatic area. Specifically it's from the legs, and it can displace and enter the systemic circulation, specifically travels to the lungs, where it causes pulmonary embolism. The second type is atherosclerotic embolus. It's a very easy topic. We have studied in these all concepts in one or the other form in previous sections. And atherosclerotic embolus नाम में ही है. atherosclerosis से होता है जब heart related, cardiovascular related problems होती हैं. When there is atherosclerotic plaque formation, इसमें जो हमारे बस कुछ नहीं है, सेम चीज़ है, बस ये जो थ्रोम्बस होगा ना, ये बना होगा प्लाग से, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल से. जब बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है हार्ट में, तो फिर उसकी वजह से प्लाग फॉर्मेशन हो जाता है. और जब ये चीज़ डिसलॉज कर जाए तो इट इज़ एथेरोस्क्लेरोटिक एम्बोलिज्म. एंड इसमें एक क्लासिक
फाइंडिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग इज कि जो हमारी वो ब्लड वेसल होगी उसके बीच में वी विल बी एबल टू see some types of clefts, and these are called cholesterol, spelling may be wrong, cholesterol clefts. So जो cholesterol clefts है, it's one of the clinical finding in atherosclerotic embolism. We can see it over here. That this is a blood vessel, and over here it's atherosclerosis, atherosclerotic embolus. How can we identify it? With the help of these clefts formed over here, and these clefts are basically cholesterol clefts, which highlight the point that over here there is a plaque or cholesterol deposition. Okay, another type of embolism is fat embolism, and fat embolism is usually associated with bones, specifically long bones, bones or long bone fracture specific to say, या फिर trauma to some bone region. Because what happens is if this is, I hope I made it right, it's just a rough view. Okay, if this is a bone, we know the center of diaphysis is medullary cavity, which we call bone marrow. We know that this is epiphysis, this is diaphysis, this is diaphysis, and this is metaphysis. ओके, तो ये जो हमारी शाफ्ट है उसमें जो ये बोन मैरो होता है, तो क्या होता है, जब भी देयर वुड बी सम फ्रैक्चर ओवर हेयर या ट्रॉमा की वजह से यहाँ से कुछ भी ब्रेकेज होगा, तो बोन मैरो के अंदर वी हैव फैट कंटेंट, तो वो फैट बाहर आ जाता है. कहाँ पे जाएगा? वो ब्लड में जाएगा, और वो ब्लड में एम्बोलाई के फॉर्म में जाएगा. So the main concept over here is fat embolus. It's basically associated with bone fractures, particularly of the long bones. Okay, or if there is some trauma to the bone tissue, so it will cause the fat exposure, yeah, specific to say expulsion of fat from the bone marrow contents, and specifically can affect the pulmonary vessels. Okay, इसके दो classical hallmark features, and they are dyspnea, and they are some skin reactions, like on the skin we can see petechia formation. You know that petechiae, they are small dots like appearances, ठीक है, blood clots type things, ठीक है, red या purple colored pinpoint dots on the skin, ठीक है. तो फैट एम्बोलिज्म की वजह से ये दो चीज़ें देखने को मिलती हैं. ओके, फोर्थ इज गैस एम्बोलिज्म. गैस एम्बोलिज्म यूजुअली वी कैन सी विद इन द डाइवर्स. जो डाइवर्स होते हैं, जब वो बहुत ही तेज़ी से ऊपर को असेंड करते हैं, तो दे हैव सिलेंडर्स. ओके, सो ओवर देयर वहाँ से क्या होता है, जो डाई नाइट्रोजन गैस है ना, वो क्योंकि एकदम से असेंडिंग की वजह से वो बबल्स फॉर्म करती है, और वो बबल्स कहाँ जाएंगे? ब्लड में जाएंगे, और वो बबल्स ही आगे जाके एम्बोलाई बना देते हैं. सो व्हाट हैपन्स इज it's usually seen with the divers. Whenever they ascend, nitrogen gas precipitates out of the blood, and it forms bubbles in the blood, and
दिस कैन कॉज जब जो डाइवर्स हैं फिर वो बेंड करेंगे, सॉरी जो डाइवर्स होते हैं, हाँ, they have joint and muscle pain, and this condition is called bends, and they also have problem in breathing, dyspnea specifically, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में एकदम तकलीफ होने लग जाएगी क्योंकि दे आर पहले पानी के नीचे है ना. सो जब भी ओके डाइवर्स होते हैं तो थिंक आई वाज गोइंग टू एक्सप्लेन इज दैट this is called choking. Okay, so this is one of the prominent cause for the gas embolism, and the other thing over here is laparoscopic surgery done for any of the reason, any of the condition. Sometimes because what happen is in laparoscopic surgery, air is pumped into the abdomen area. So while that procedure, sometimes it happens that there is formation of some gas embolus, and it can create further problems. So I want to repeat this thing that whenever divers they ascend rapidly, what happens is there is nitrogen gas, and it forms bubbles in the blood, which can cause embolism, due to which the prominent symptoms is bends and chokes. Bends means pain in the joint and muscle, and chokes means respiratory issues like specifically dyspnea. And over here also, whenever there is fat embolus, classical findings is petechia on the skin and dyspnea. Okay, so this condition of dyspnea is basically breathing disorder, shortness of breath. Another thing I want to tell over here was this disease. There is a name of this disease. Whenever this condition arises in divers, it's called Kazan's disease. Kazan disease, and we also call it decompression sickness. Decompression sickness. Okay, not laparoscopic surgery. Don't mix it. Okay, so whenever there is this condition of this, जब nitrogen gas से bubbles, blood emboli जो भी है, this is called Kazan's disease. Okay, the last thing which can cause embolism, I have discussed it in DIC. It was amniotic fluid embolism. Amniotic fluid embolism हमने पढ़ा था कि जो DIC होता है ना, एक condition disseminated intravascular coagulation. In this condition what happens is that it is usually secondary, किसी और reasons की वजह से होता है, और वो secondary conditions में हमारे पास आते हैं obstetric complications like अगर amniotic fluid embolism हो जाएगा तो क्या होता है कि amniotic fluid is rich in tissue thromboplastin, and during the labor or during delivery, if there is amniotic fluid embolism, what happens is tissue thromboplastin from the amniotic fluid is released, and it gets increased, and it is responsible to activate extrinsic pathway of coagulation cascade, and what happens is further it can lead to this condition, serious problem of DIC, which is disseminated intravascular coagulation. So it in this condition, amniotic fluid embolism, the major symptoms, clinical findings, it's same thing, dyspnea, there is shortness of breath, DIC, because ये cause कर सकता है DIC को, and we can also see some neurological symptoms, and that's the thing. एक और चीज़ कि it's asked usually why it can cause DIC. It's because of this factor, tissue thromboplastin, because amniotic fluid has a thrombogenic nature because it contains factor 3.
tissue thromboplastin, which is defined to activate extrinsic pathway of coagulation cascade. Another important point over here is that how can we identify amniotic fluid embolus in the blood basically, or like in the microscope. So it's characterized by कि जो squamous cells होते हैं या फिर जो भी कैरेटिन या डेब्रीज होती हैं, मतलब वेस्ट होता है, फ्रॉम द फीटस इट ट्रेवल्स द मैटरनल ब्लड. From fetal skin it's traveled in the maternal blood as embolus. मतलब in the embolus form these cells would be traveling to the maternal blood, and we can see high increment in the amount of keratin debris and squamous cells in the maternal blood at that point. So this is a classic microscopic finding. So thromboembolus पढ़ लिया, 95% कॉज होता है ये एम्बोलिज्म का. एथेरोस्क्लेरोटिक जब कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट्स दिखेंगे हमें. फैट एम्बोलिज्म में डिस्पीनिया, स्किन में रिएक्शन, बोन्स रिलेटेड होता है. गैस में डाइवर्स का केस है या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का. केजन्स डिजीज सेम, बेंड्स या चोक्स आती है इसमें. एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में डिस्पीनिया, डीआईसी, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होता है. इसके बाद हमारे पास लास्ट पल्मनरी एम्बोलिज्म. Most common cause for pulmonary embolism, as I told, is it is usually due to thromboembolus. I told thromboembolus में that most common example, it's first of all this thromboembolus is one of the most common types of embolus. More than 95% of patients who have embolism, they are reported with thromboembolus condition in which DVT से pulmonary embolism होता है. ठीक है. एंड पल्मनरी एम्बोलिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स यूजुअली ड्यू टू थ्रोम्बोएम्बोलस. ठीक है, यूजुअली ड्यू टू thromboembolus, and the most common source is deep veins. We know this thing that DVT की वजह से pulmonary embolism होता है. इसमें क्या होता है, what happens is कि usually ये अपने आप ठीक हो जाता है because lung has a dual lung is involved in systemic circulation. We know this thing from high school classes, from 10th, 11th, 12th, that lungs are involved in systemic circulation in which it has a dual blood supply. और इसकी वजह से क्या होता है कि यूजुअली दीज एम्बोलाई विच आर फॉर्म्ड, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर वेरी माइनर, एंड ड्यू टू विच दे it's self-limited condition in which they resolve on its own, but only very very little amount or little percentage of emboli formed are so large that it can cause this condition. So only 10% of we can say कि ये चीज़ हो सकती है. और एक और चीज़ कि if why this condition is serious, because this condition can cause pulmonary infarction. पर सिर्फ 10% ही पल्मनरी एम्बोलिज्म ऐसे होते हैं जो पल्मनरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, क्योंकि यूजुअली जो ये एम्बोलाई होते हैं ये अपने आप ही रिजॉल्व हो जाते हैं. दे आर सेल्फ लिमिटेड. These emboli are self-limited and the condition resolves on its own. But if there are some major embolus formation, then it can lead to pulmonary embolism, which can further occlude the major arteries. Okay, so the major arteries, if they are blocked, we know that from the lungs there is supply to the heart, so it can lead to pulmonary infarction, and it's a very serious complication of pulmonary embolism. So usually it's self-limited, but if it's not, then it can cause pulmonary infarction. It's a very very serious condition, and the what was I saying? Yes, the clinical presentation would be dyspnea again, shortness of breath, then chest pain will be there, pleuritic chest pain. Okay,
there will be pleuritic chest pain, and there will be blood coughing, personal coughing blood, that's called hemoptysis. Why hemoptysis? Because लंग्स में ऑक्लूजन की वजह से लंग्स आगे सिस्टमिक सर्कुलेशन में काम करता है, मतलब हार्ट में सप्लाई करता है. वी नो दैट लंग्स से आगे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाता है. फॉर एग्जांपल अगर ये मेजर कौन लेके जाता है? पल्मनरी वेन. फॉर एग्जांपल अगर इसमें ऑक्लूजन आ गया पल्मनरी वेन में, तो क्या यहाँ पे ब्लड पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा. ठीक है. या फिर हमें पता है कि यहाँ से पल्मनरी ट्रंक, फिर पल्मनरी आर्टरीज लंग में जाती हैं. सपोज दीज आर द पल्मनरी आर्टरीज जो लंग में जा रही हैं डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऑक्लूजन आ गया तो क्या होगा? मतलब द मेजर आर्टरीज एंड वेसल्स वुड बी occluded, obstructed, due to which the person could cough up to blood. And very important point over here will be, we can see pleural effusion. And ठीक है, इसके डायग्नोस कैसे कर सकते हो तुम, वो मैं समझाती हूँ. डायग्नोसिस इज V/Q स्कैन. इसमें आपको मिसमैच दिखेगा. वी हैव स्टडीड अबाउट इट लाइक इन द फर्स्ट ईयर. जैसे एम्ब्रियोलॉजी में भी था, हिस्टोलॉजी में था, फिजियोलॉजी में भी था. वी स्टैंड्स फॉर वेंटिलेशन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम disorders, ventilation. And Q stands for perfusion. What happens is ventilation का क्या मतलब है कि जब ये एक पर्सन है, ये उसके लंग्स हैं फॉर एग्जाम्पल. ओके, सो यहाँ पे एयर है. वेंटिलेशन इज एयर बंदे ने इनहेल की, ठीक है, और वो एयर लंग्स तक पहुंची. दिस इज वेंटिलेशन. ठीक है. सो वेंटिलेशन इज व्हेन normally when air is reaching the lung area, it's basically ventilation. And perfusion is कि when हमारे लंग्स में जो भी वेसल्स इन्वॉल्व है वहाँ से RBCs जा रहे हैं, राइट, ब्लड जा रहा है. सो व्हेन ब्लड रीचेस द लंग एरिया, जब ब्लड, देखो जितना जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए उतना ही खून भी है ज़रूरी. ठीक है. तो व्हेन एयर इज़ नॉर्मली रीचिंग द लंग एरिया, तो मतलब यहाँ पे गुड ऑक्सीजन सप्लाई है, हवा पहुँच रही है प्रॉपरली. ठीक है. वेंटिलेशन प्रॉपर है. वेंटिलेशन का क्या मतलब हुआ? हवा पहुँच रही है. हम कई बार कहते हैं लाइक ओपन द विंडोज, वी नीड वेंटिलेशन इन द रूम. सो इट्स बेसिकली व्हेन एयर इज रीचिंग द लंग एरिया. एंड परफ्यूजन इज व्हेन द ब्लड इज रीचिंग द लंग एरिया. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? Is there any obstruction in the airway pathway? No. When is ventilation impaired? It would be impaired in cases of asthma, in the cases of COPD, in some respiratory distress condition. क्योंकि उस केस में वेंटिलेशन कम होगी, उसमें ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें क्या है, हवा नहीं ले पा रहा, बिकॉज दिस ब्रोंकियल पाथवेज वुड बी constricted. There will be bronchospasm, there will be bronchoconstriction. We know this thing in like in asthma or in COPD, that the bronchial pathways, they are constricted, they are obstructed due to bronchospasm. तो वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से एयर पाथवे वुड बी ऑब्स्ट्रक्टेड. तो एयर वुड नॉट बी एबल टू रीच द लंग्स प्रॉपरली, ड्यू टू विच we can say this condition is bronchospasm, or it could be asthma, or it could be COPD, depends, it's acute or it's chronic or any other thing, or it's triggered by smoking or some else condition or some occupational disorder. Whatever it is, it will relate to this thing that there would be V/Q mismatch in which ventilation would be impaired. But over here there is normal ventilation, patient has no problem in breathing air, but due to less blood supply, क्योंकि यहाँ पे एम्बोलाई है, ब्लड मेजर आर्टरीज में ऑक्लूजन है, तो सो ब्लड विल नॉट बी एबल टू रीच द लंग्स प्रॉपरली, ड्यू टू विच द परफ्यूजन वुड बी रिड्यूस्ड
परफ्यूजन वुड बी रिड्यूस्ड बट वेंटिलेशन विल बी नॉर्मल. तो इसके रिडक्शन की वजह से देयर वुड बी अ मिसमैच. आई होप यू अंडरस्टैंड. No one else can explain better, I think. Okay, another thing which another diagnostic test which we can do is okay, so if air is properly reaching the area, why there is chest pain? क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच रहा. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि खून अच्छे से नहीं पहुंच रहा. तो खून में भी तो क्या है, आरबीसीज हैं. आरबीसीज क्या, हीमोग्लोबिन होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन से बाइंडिंग होती है. ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वुड बी सीन. But we won't see any type of wheezing or any type of what do we call it, yeah, specifically wheezing. It's not seen in this condition. Why wheezing is not seen? Because wheezing is somewhere related with the airway obstructive diseases like asthma, or yeah, specifically asthma. So we can relate it with that. Another diagnostic test is CT scan, in which it shows filling defect in the pulmonary artery. Second thing is D-dimer. D-dimer test. D-dimer would be elevated in this condition. Okay, and we can also see D-dimer elevated. अभी तक हमने दो conditions में पढ़ा. एक है DIC, एक है pulmonary embolism. क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी same जो मैंने D-dimer का concept समझाया था, it happens. Okay, इसके अलावा we can have a Doppler ultrasound. Doppler ultrasound can USG ultrasonography, it can help to detect DVT. अगर DVT होता है, it detects that thing. So classical presentation over here is these things as I told. इसके अलावा gross examination में infarction is seen, that's wedge shaped. What happens is, for example, इसको ना एक और कंडीशन से मैं समझा सकती हूँ. पहले मैं आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट सैडल pulmonary embolism. It's a type of pulmonary embolism and it's a very rare condition and it's life threatening condition, because what happens, it's rare but it's life threatening, because what happens is thrombus जो होता है, it becomes lodged at the fork, at the bifurcation of the main pulmonary artery. Wait, let me form the picture. For this is trachea for example, and ये हमारे आगे ये lungs में ये है. These are the lungs for example. Okay, और ये आगे अपनी जो भी हमारे वो डिवीजन है. ठीक है, पीछे यहाँ से ये सपोज दिस इज पीछे से पल्मनरी आर्टरी, दिस इज द पल्मनरी ट्रंक एंड दिस इज our right and left pulmonary artery respectively. So in this condition, in the saddle pulmonary embolism, जो ये clot होता है ना, it basically dislodges this is a fork shaped picture, we can say. It's a bifurcation of the main pulmonary artery. Over here there is dislodge. For example, यहाँ पे blockage, emboli आ गया. So what happens? The supply to both lungs would be altered. पीछे मैंने अभी एक हार्ट का I deleted it. So whenever कि अगर ये हार्ट है, we know that lungs से कैसे related है. एक तो हमारे पास ये लेफ्ट एट्रियम में पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है. दूसरा यहाँ से राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी ट्रंक जाता है राइट एंड लेफ्ट लंग में. ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके. बट इफ देयर इज एम्बुलस ओवर हेयर, it will cause a major issue, and this is called saddle pulmonary embolism, which is a very rare but life threatening condition. Okay, so if not just in saddle but in general pulmonary embolism में भी ये हमारी bifurcations हैं. ठीक है, ये मतलब ये vessels हैं, ऐसे करके है ना, कुछ भी बना लो. So suppose in this area there is embolus, तो क्या होता है ना कि इस तरह से एक वेज शेप्ड वो आ जाता है ब्लॉकेज.
infarct. This is wedge shaped infarct means the tissue death will occur because इस एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कुछ रुकावट आ गया, देयर इज़ अ क्लॉट, देयर इज़ अ ऑब्स्ट्रक्शन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी. एस्कीमिया, hypoxia, which ultimately leads to ischemia, which ultimately leads to infarction. This is the major mechanism we have studied in chapter 1. Okay, so over here, wedge shaped infarct in which this point, it points towards the occlusion, it points towards the this point towards the occlusion point, towards the occlusion जहाँ पे रुकावट है. Okay, so this is one of the another features in the gross examination, and I have already told you about the saddle embolism, which is a very rare but life threatening disease, disorder, okay, in which the major artery of the lungs, it's occluded, and it is very serious condition because it can lead to death. And major reason जो MCQs में question पूछा जाता है, high yield point is what causes death in this condition. We say that it's dislodging of the embolus in the main pulmonary artery, but it is called electromechanical dissociation. Electromechanical dissociation. Okay, by this the chapter completes. Last point over here to mention is एक और तरह का embolism, which is systemic embolism, एंड वो कुछ भी नहीं है, वो सेम ही चीज़ है. ये भी एक तरह का थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का पार्ट है, ठीक है. और इसमें क्या होता है, ये भी हमने पहले पढ़ रखा है, लेफ्ट एंड राइट साइडेड डिसऑर्डर्स में एनाटमी में पढ़ रखा है कि इट्स मोस्ट कॉमनली इट अराइजेज विद द लेफ्ट हार्ट. मतलब कि जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या फिर देयर इज एट्रियल फिब्रिलेशन, व्हाट हैपन्स इज लेफ्ट हार्ट इज obstructed, there is obstruction in the left heart which leads to systemic embolism basically, and it can further travel down to the systemic circulation and specifically in the lower extremities, ठीक है, and can cause problem over there. So this was all about this chapter, and by this the chapter is completed, and in next session we will have a quick revision of all the topics by solving some of the questions. Thank you.